डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक और स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स वन के लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। हम सीखेंगे आज रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट टाइम हमने एंट्रोपी को थोड़ा स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया कि उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम वहीं से रीस्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास रिलेशनशिप है एंट्रोपी के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट इज़ एस इक्वल्स के बी log ऑफ ओमेगा। और इस केस में हमारे पास ओमेगा जो है वो दी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इसको हम इक्वेशन वन कहते हैं। और बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है ये बताता है कि एंट्रोपी कैसे कनेक्टेड है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन सम केसेस। सो वी गो बियॉन्ड दैट नाउ। सो हम देखते हैं, हम एक जनरल केस लिखते हैं कि लेट देयर बी n total number of microstates in a system and there are I number of macrostates and Ni is the number of microstates in any of these states in ith state, such that summation over I equals n. So the sum of all microstates is equal to the total number of microstates. So we call this equation 2. Now we go back to the probability thing and we say, okay, the probability of finding the system in ith macrostate is we write this as Pi
and that is basically equal to the number of microstates in I divided by total microstates. So that is very straightforward. So we write it like Pi equals Ni over N. We call it 3, and with a condition, you know that sum of probabilities should be equal to 1, so we write it like, okay, sum of probabilities is 1, and we call this as number 4. We always know that sum of probabilities is 1, and so from 3 and 4 we may also write, okay, sum over I and I over N, that is also equal to 1, and we call this 5 for reference, for future references. Okay, now we write the entropy of the system. Entropy of the system is, or we call it total entropy of the system. So I write S total, that is equal to KB times natural log of N. Okay, call it 6, and entropy of the ith macrostate is Si, and that is equal to Kb log of Ni, because okay, since ith state contains n microstates, total they are n, so we write them as this, and I am piling up number of equations, so in fraction of seconds I reached equation 7, so don't worry, we will get around this thing. Okay, so we have another method. To write total entropy how? So we write S total equal to, I go further to the left, I think I should go further to left, so I write S total equal to KB times log N, and we can actually decompose this N into two factors. So what we write, KB natural log of average number of microstates in any state, और हाँ उसको याद रखने के लिए कह सकते हैं ith स्टेट में, ith स्टेट से मुराद कोई भी स्टेट हो सकती है ना, तो उसमें जो एवरेज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हों पूरे सिस्टम की, और उसको हम मल्टीप्लाई करें
यहाँ मैं एक और ब्रैकेट यूज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये एन की डिकम्पोजिशन हो रही है, कैपिटल एन की। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मैक्रोस्टेट्स, नॉट माइक्रो, मैक्रोस्टेट्स। ओके, और एवरेज अगर किसी ith स्टेट में एन आई माइक्रोस्टेट्स हैं तो उनकी एवरेज कैसे लिखते हैं हम? वी राइट इट के बी लॉग ऑफ एन आई एवरेज। एवरेज वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में आपने एवरेज वैल्यूज़ लिखने सीखी होंगी इस तरह से। और टाइम्स टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, हाउ मेनी आर दीज आर आई, ये हमने ऊपर सपोज किया हुआ है, हमने इस सारी चीज़ को साथ लेके चलें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि लॉगरिथम के अंदर दो टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर हम इनके लॉग ओपन करेंगे तो विल गेट के बी लॉग ऑफ एन आई एवरेज प्लस के बी लॉग ऑफ आई। ओके, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं। फर्दर हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आपका ये जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू हियर, this actually gives us the entropy of a macroscopic state. This is what? Entropy of any macrostate. So हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि we have total entropy as total, that is equal to some term like this, k be natural log of average value of ni plus s macroscopic, मैक्रोस्टेट लिख सकते हैं इसको एस मैक्रो। इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन 8। ओके, सो यहाँ इस स्टेज तक हम आ गए। यहाँ पे मैं रुकूंगा थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा इसकी मैक्रो स्टेट की एंट्रोपी के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। अब हम यहाँ गौर करें अगर इस सिस्टम पे, तो हमारे पास एंट्रोपी को हमने टोटल एंट्रोपी को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में। एक पार्ट इसका रिलेटेड है मैक्रोस्कोप और दूसरा डेफिनेटली ये क्या है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक। अब एंट्रोपी हम कुछ ख़ास जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते। ये जो क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक कंट्रीब्यूशन, and this is not easy to measure, or we can say okay, for the time being हम कह देते हैं कि not possible to be measured. However, macroscopic जो एंट्रोपी है, this is exactly what we can measure in an experiment
कैसे मेजर करेंगे? इसका ताल्लुक किसी हद तक सीपी और सीवी से जुड़ा हुआ है। हमने थर्मोडायनामिक्स में देखा था कि एंट्रोपी को हम डायरेक्टली कैसे मेजर करेंगे, बाय मेजरिंग टेम्परेचर एंड सीपी और सीवी। और we had this relationship, okay, entropy equals Cp dt over T, or entropy was equal to Cv dt over T. तो ये उधर से कनेक्टेड है ये सारी चीज़। और ये वो क्वांटिटी है जो हम एक्चुअली मेजर करते हैं, जिसके हम बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक कंट्रीब्यूशन है वो जस्ट हम थ्योरेटिकली ही एस्टिमेट कर सकते हैं, वी कैन नॉट मेजर इट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ओके फाइन, हम अब ये थोड़ी सी डिस्कशन आपको समझाने के लिए की है। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, 8 को रीअरेंज करते हैं। सो चूँकि हमारा जो मकसद है वो है एस्टिमेट करना मैक्रोस्कोपिक, तो हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो वी गेट एस मैक्रोस्कोपिक, तो हम 8 को रीअरेंज करते हैं। एस मैक्रोस्कोपिक इक्वल्स एस टोटल माइनस के बी लॉग ऑफ एवरेज। सो आप इक्वेशन 8 दोनों को इक्वेशन 8 ही नंबरेट करें, नई इक्वेशन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आई विल स्टिल कॉल दिस इक्वेशन 8। वो आपको समझाने के लिए वो तो मैंने 8 दिया था, सो यू कैन कॉल दिस इक्वेशन स्टिल इक्वेशन 8। अब एक और रूल हम जानेंगे, इसका जिक्र मैं पहले नहीं कर सका, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालनी हो फिर हमने, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एन आई है, तो उसकी हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखते हैं समेशन over I n I p I divided by summation over all probabilities। और summation over all probabilities आपको पता 1 होता है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं summation over I n I p I। ये वैल्यू एन आई एवरेज की, इसको साथ में लिख देता हूँ। इसको हम कैसे लिखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एन आई, इसको हम लिखते कैसे हैं, एन आई, जस्ट ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, और नीचे मैं उसको मैथमेटिकली लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट इज सिंपली इक्वल्स एन आई पी आई, क्योंकि आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज इक्वल टू 1। This thing here is equal to 1। Okay, then what we do, we pick this value of average value of ni and put it in equation 8। So we get S macroscopic equals S total minus KB log of summation ni pi। और एस टोटल की वैल्यू आपको मालूम है, हमारे पास एस टोटल की वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी, इक्वेशन हमारे पास थी, इक्वेशन थी हमारे पास एस टोटल के लिए, हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी इक्वेशन 6। तो हम इक्वेशन 6 से एस टोटल की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो वी गेट के बी log of n minus kb log of
summation over I and I pi. So this whole thing is inside the log. I should have written it even above that. Okay, so we have to do some trick here. So the trick is we can introduce a pi here over here, summation over pi, because it's always equal to 1. So we write, okay, kb log of n times summation over I pi. So it will not make a difference, because okay, it's a 1 minus kb log of summation over I pi. Sorry, I missed something here. Ni. And we take this summation over pi common along with kb. So kb summation over I pi, we take this thing common, and inside we are left with log of n minus log of ni. And we can simplify it. Okay, we have two logarithms, so we write it as log of n over ni. And we know from our equation, if you see here, we had an equation here, equation 5, or equation 3 for example. So we have to use equation 3. So we had pi equals ni over n, but here it's n over ni, so we have to reverse it to make it equal to pi, or we can write it 1 over pi. So, and then we can later simplify this. So we write it kb times sum over I pi natural log of 1 over pi. And if we remove this fraction here, we introduce a minus sign in the beginning, simple rules of logarithm. So now we write kb summation over I pi log of pi. So this is our macroscopic definition of macroscopic entropy. So what we call this? We call this definition of macroscopic entropy. I write it. Macroscopic, or related to macrostates. Entropy. So you can see here that we have presented entropy in form of probabilities. You can clearly see that here. So this relation is very important for us, and we will later explore
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में तो हमने लिखा है एंट्रोपी को और इसको हम यूज़ भी करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा हमें इंफॉर्मेशन थ्योरी में भी है। वो हम देखेंगे कि हम इंफॉर्मेशन कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So there are two equivalent definitions of entropy we have now. So S equals KB natural log of omega, one definition, and S equals minus KB times summation over I EI log of EI. So this gives us the entropy of ith entropy in terms of ith in terms of the probability of ith macrostate or any state actually, but in terms of इसको मैं more generalized करके लिखता हूँ. This gives us entropy in terms of probability of macrostates. तो इसको हम यूज़ करेंगे बार में इस कोर्स के दौरान. तो ये लेक्चर यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और हम फर्दर जानेंगे एंट्रोपी का रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन कंटेंट से नेक्स्ट लेक्चर में. बहुत शुक्रिया आपका.